सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी शुरू थोड़ी हुई है, मैं तो ऐसे चेक कर रहा हूँ स्लाइड्स को। ठीक है, बट माइक आपका सही आई थिंक शो लगा हुआ नहीं है शायद। अब सही है ना? नीचे भी देख लो भाई, उसमें तो यार सही था, यहाँ पे कैसे फ़ॉन्ट चेंज हो गए, ये देखो सारा ऊपर नीचे हो गया। अपना लैपटॉप ले आऊँ? हाँ, तो फिर तुमको ये सारे ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हाँ, तो भाई बहुत सारी स्लाइड हैं, कोई 40 स्लाइड हैं, कैसे सेट करोगे? हाँ, करो जल्दी से करो फिर, क्योंकि मुझे पता नहीं वो लैपटॉप में कुछ इशू आए तो फिर, और तो इसको फिलहाल बंद कर दो, इसमें ठीक कर लो पहले। हाँ, इसमें दो है ना, छोटा कर दो इमेज को थोड़ा सा आगे। हो गया? ऊपर वाले में जाओ, सही है। इसको भी छोटा करना पड़ेगा। तुम फ़ॉन्ट भी छोटा कर सकते, सारे फ़ॉन्ट आगे पीछे हो गए हैं।
તું પી ભરે મારો ચા પી બની તું सारी पंच लाइन तो देख रहे हैं सब। अब बचेगा क्या? क्या हुआ? जूम से किसी ने साइन आउट कर दिया ना? हो गया? हाँ, मेरा ख्याल है एनिमेशन हैं इसके अंदर, ऊपर सब में ही है। एडजस्टमेंट्स हो गए, प्ले करना इसको, दिखाओ। ये नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये भी शेयर किया हुआ तुमने इसको? हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करो।
जैसे आपको थोड़ा इंट्रो करवाना है, लाइक इंट्रो इन द सेंस अपने जो कमेटी के बारे में बात करनी है। हाँ, कौन सा है? मिस आपकी ऑडियो रिमोट पे अच्छी नहीं है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी, अब कुछ आ रही है। ठीक है, सो हमने इसको फॉर्मली एक शेप दे दिया है। अब तक जो टिकटॉक्स हो रही थी वो थोड़ी सी जो है वो इनफॉर्मल किस्म की होती थी, बट अब एक ऑफिशियल टिकटॉक कमेटी फॉर्म कर ली है। और थोड़ा सा प्रोसेस ये कि आप जो हमारी कमेटी फॉर्म करने के बाद जो फर्स्ट टिकटॉक है वो सर मुस्तफ़ा और आफान की है। जैसे ही ये टॉक हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, वो इस्माइल आप लोगों को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। उसके अंदर जो फॉर्म होगा उस सब में आप लोगों ने अपनी सजेशंस देनी है। ठीक है, फीडबैक कैसा लगा, और भी कोई फीडबैक हो या और भी कोई सजेशंस हो, इससे पहले भी एक ब्रॉडकास्ट लिंक हमने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो उस पर अपनी सजेशंस दें कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, कितनी ज्यादा टेक रिलेटेड होनी चाहिए, अगर नॉन टेक रिलेटेड हो तो क्या टॉपिक्स होने चाहिए। सो गिव मी योर सजेशंस और इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि एवरी वीक कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव सेशन जरूर हो जो आप लोगों के लिए फायदा हो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इन सजेशंस का रिव्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो खुल के दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो जी सदा मैं एक दो चेयर यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दूँ ताकि फन वीडियो यहाँ वीडियो। ओके, सो आज हमारी जो टॉक का टॉपिक है वो है जेनेटिक ये थोड़ा फ़ॉन्ट के इश्यूज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द नेक्स्ट फ्रंटियर। अच्छा, अब इसमें जो टॉपिक है इसमें जो आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस जो है कोर्स में है, और फ्रंटियर वेदर इट इज़ अ फ्रंटियर और नॉट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है इसको मैं और आफान प्रेजेंट करेंगे। इसको जो बनाया गया है वो हमने एक नया इनिशिएटिव तैयार किया है यहाँ पे जेनेटिक में, उसका नाम है गेट लैब। ठीक है, एंड गेट लैब स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब्स। ठीक है, गेट लैब में इससे पहले कि जो मेन टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें जाऊँ, आई वांट टू टॉक जस्ट टेक 2 मिनट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द गेट लैब इनिशिएटिव। इसका क्या मकसद है? द गेट लैब के जो प्लान्स हैं, लाइक आई सेड इट स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब, और इसके जो प्लान्स हैं वो ये हैं कि वी वांट टू सेट अप ए थीम और एन इनिशिएटिव और ए sort of like a center जहाँ से जो है we do work that leads the research and implementation of emerging technologies at Genetech. ठीक है, and generally जो goals होंगे गेट लैब के वो ये है कि we want to be able to guide the team about the viability, challenges, marketability and adoption of emerging technology. So emerging technology, AI, as you know, is an example of an emerging technology. It's not as emerging, I mean it's pretty old, but still जो अभी हमारा challenges हैं in terms of that, we're still an emerging era of that technology. उसके अलावा भी जो नई technologies हैं उन पे research करना, and then generally come up with guidance and some sort of a roadmap that the rest of the team can follow to implement those technologies, use them, create products around them, provide services around them to the customers. तो ये गेट लैब का जो है मकसद है। इसके जो members हैं, they are going to be on a rotational basis, so it's not like दो तीन pick कर लिए, they are going to be there forever. It's going to be a rotational sort of a roster जिसमें जो है वो पुराने members काम कर रहे होंगे,
and depending on their role, there will be some sort of rotation. Kis qisam ka hoga, we haven't really figured it out. This is really just the first take on what we want to do with GitLab. And then, like I said, another goal is to build and or suggest prototypes and MVPs around those technologies. Okay, so ये GitLab का मकसद है. And then generally, इसका फायदा क्या होगा? Obviously it's an exciting initiative for everybody. Everybody wants to work with emerging technologies, but जो इसका on the ground ये फायदा होगा कि we will be able to provide foot in the door guidance and also initial training to the rest of the team. So let's say that a नई technology आती है जिस पे हम चाहते हैं कि हमारी team काम करे, GitLab will get into it, try to figure it out, try to figure out the initial challenges around it, maybe come up with some sort of training. अगर training नहीं तो training plan जो कि हम फिर जो है इस्तेमाल करें within the company to create more skills around that technology. ठीक है जी? तो ये this is a very short introduction into GitLab. Okay, now I want to get into the main topic, which is AI. So I will start with just a basic, very quick background of what the roots of AI are. AI is not new, like I said, it's been around for a very long time. Actually, it's been around since 1950s. So, it's been older than, I want to say, all of us. Okay. And it has gone through a lot of different cycles. इसमें जो है जब 1950s में नई AI आई थी तो लोग समझते थे कि oh wow क्या मिल गया, so there were different cycles of optimism followed by pessimism. एक एज आती थी जिसमें लोग समझते थे कि AI is going to take over the world, AI is everything, ठीक है. और फिर उसके बाद जो है 5-10 साल काम करने के बाद लगता था कि कुछ नहीं हुआ, तो लोग भूल जाते थे. Then there was an era of pessimism. So right now we are going through an era of extreme optimism. Everything is AI, जिसको देखो AI, ठीक है, जहाँ देखो AI, सही है. So we are going through an era of extreme optimism. That's not to say कि इसके बाद pessimism आएगा. We don't know. We are going through an era of extreme optimism right now. ठीक है. और ये जो optimism अभी जो है, it is primarily fueled by big data because there's a lot of data out there. The big data की field जिससे हमें जो है बहुत सारा data मिल रहा है to be able to train AI that's out there. Computing power बढ़ गया. Large parallel computers are now available, which weren't there, maybe 15, 20, 30 years ago. And then और अब जो एक नया जो and I'll talk a lot more about it, is the algorithms called deep learning. Deep learning क्या होता है, we'll talk about that a little bit. ठीक है. So right now we're going through an area of extreme optimism, and it's fueled by these agents right now. ठीक है. अच्छा. And then, like I said, the optimism dates back to the 1950s. Okay, but it's been like up and down. And ये तुम्हारा वाला area तो नहीं था. अच्छा, शुरू में जो है वो जो 1950s में जो काम शुरू हुआ था, it was started with what is called the perceptron architecture. ठीक है. अब वो perceptron architecture क्या है? It's very deep. I'm not going to get into it, but I just want to show you what it looked like. This is what it looked like. ठीक है. ये perceptron architecture का main frame था उस वक्त. ठीक है. You can tell where it was going. It wasn't going to do a lot. लेकिन इसके अराउंड भी जो था वो predictions आना शुरू हो गई थी, और उस वक्त prediction जो 1958 में prediction थी कि AI will be able to walk, talk, see, have children and be conscious of its existence. So the predictions जो है, as we go down the slides, you will see that different eras had different predictions. Now they're still, we are going through some of these, but maybe they are a little bit more nuanced than they used to be. So this was, like I said, 1950s was an era of optimism. And here's an example of the kind of optimism that we were going through in 1950s. Acha, I'm going to give it to Afan now. He'll take us through a little bit more in terms of AI roots, and then we'll talk more. Mike.
तो अस्सलाम वालेकुम। तो अगर हम हिस्ट्री के ऊपर आते हैं अगर एआई की, तो एआई की हिस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के अंदर जो सर ने बताया कि एक्साइटमेंट थी बहुत, तो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर एक्सट्रीम प्रेडिक्शंस भी आई कि भाई एआई से इतना हो सकता है। फॉर एग्जांपल इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो इस तरह की थी कि अगले जो 20 साल होंगे उसके अंदर एआई और ह्यूमन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, कि जो काम इंसान से हो सकता है उसके लिए वो एआई से भी हमारे लिए फिर हो सकता है। लेकिन इसके अंदर अभी भी अगर हम अपने अगर प्रेजेंट के ऊपर आते हैं तो अभी अभी एआई इतनी ट्रांसफॉर्म हुई नहीं है कि हम एआई और इंसान को एज अ एक ही उसके अंदर देख सके पैरामीटर में। और अगर हम आगे आते हैं तो फिर ये एंड्रयू इनकी एआई के अंदर काफ़ी एक्सपर्टीज हैं और को फाउंडर भी हैं ये, और भी या बिग ब्रांड्स वगैरह की ऐसे इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर एआई के अंदर, तो इन्होंने एआई को इलेक्ट्रिसिटी के इक्विवेलेंट रखा है। फॉर एग्जांपल की इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो वो आज हमारे लिए सबके लिए ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो लाइफ का एसेंशियल हिस्सा है कि इलेक्ट्रिसिटी लाजमी होनी चाहिए। तो इनकी जो प्रिडिक्शन है वो ऐसी है कि 100 ईयर्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी से हमारी ज़िंदगी फॉर एग्जाम्पल इतनी एसेंशियल हो गई है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही एआई का भी जो इम्पैक्ट आएगा वो हर इंडस्ट्री पे आएगा। तो मतलब कोई ऐसी एक इंडस्ट्री नहीं बोल सकते हम कि उसके अंदर एआई का इम्पैक्ट ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडस्ट्री अभी है कि अभी उसमें एआई का इतना इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आगे उसके अंदर एआई का उनमें भी इम्पैक्ट लाजमी आएगा। और अगर हम इन पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल इलॉन, तो इनका एक इंटरव्यू हो रहा था एमआईटी के अंदर, तो उन्होंने एआई को उसके अंदर एक थ्रेड बताया कि एआई हमारे लिए एक थ्रेड है। फॉर एग्जाम्पल उनका मतलब ऐसा नहीं था कि एआई है ही थ्रेड, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर एक अल्फाज यूज हुआ था कि फुलिश के नाम का, कि अगर ये एआई अगर अच्छे इस्तेमाल के अंदर होती है तो हमारे लिए फिर बेनिफिशियल भी है, लेकिन अगर हमने इसे फॉर एग्जाम्पल फुलिश एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फिर अगर इन्वेस्टमेंट की तो ये हमारे लिए फिर डेंजरस भी हो सकती है ह्यूमैनिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल के न्यूक्लियर जो हथियार वगैरह आजकल यूज़ होते हैं ये उनसे भी ज़्यादा हो सकती है अगर इनका जो इस्तेमाल है वो फिर रॉन्ग वे के अंदर किया जाए। और इनके ऊपर आते हैं फॉर एग्जाम्पल ये ऑथर भी हैं, ये बुक के और स्कॉलर भी हैं, तो इन्होंने एआई के हवाले से ये ना इनके जो स्टेटमेंट है वो स्कैरी सी है। फॉर एग्जाम्पल के इनका जो इंटरेस्ट था वो फिर म्यूज़िक के अंदर था, तो इनकी असेसमेंट ऐसी थी कि फॉर एग्जाम्पल के म्यूज़िक के अंदर इंसान की अपनी इमोशंस होती हैं, वो फीलिंग्स होती हैं, तो इनका ऐसा मानना था कि एआई इतनी उस पर आ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल फिर एक हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम आता है, उसके अंदर एआई का प्रोग्राम होता है, वो उसके अंदर ऐसा होता है कि जो उनका ऑथर होता है जो प्रोग्राम जो फिर लिखते हैं वो भी फिर म्यूजिशियन होता है, तो वो अपनी क्लासेस के लिए एक प्रोग्राम एआई पे लिखते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर जो फॉर एग्जाम्पल के म्यूजिक के स्टेप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो फिर बनाता है एल्गोरिथम्स के उस पे। तो वो ऑलमोस्ट मतलब ओरिजिनल तो नहीं होता है वो, लेकिन ऑलमोस्ट ओरिजिनल के आसपास ही होता है। तो उससे इनको स्टेटमेंट आती है कि हम ब्लाइंडली स्टेटमेंट के ऊपर एआई के ऊपर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए फिर मतलब वो थ्रेट भी हो सकता है। तो आज की फॉर एग्जाम्पल जो फिर टॉक होगी वो इसके अंदर है कि क्या बोलते हैं, अभी भी हिस्ट्री के अंदर अगर हम स्टेटमेंट्स उठाएं वो ओवरऑल तो मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट हो, लेकिन उन स्टेटमेंट्स के अंदर उसके अंदर ट्रुथ भी होता है कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आगे आते हैं तो आज जो हमारी ट्राई होगी वो हम हम्बली अंडरस्टैंड होगी कि एआई को हम फिर समझ सकें कि एआई होती है क्या। आगे आते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एजेंडा के ऊपर आ जाते हैं, तो एआई है क्या, और डीप लर्निंग के हवाले से स्टडीज होगी, और फिर मशीन जो होती है एआई के अंदर इम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर तो वो क्या होता है, तो फिर बैरियर्स के हवाले से और फिर आगे आते हैं तो फिर एंड पॉइंट। तो एक आम इंसान के लिए जो एआई होती है फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इस्तेमाल के अंदर है वो हमारे लिए फिर जीपीएस हो गया, और फिर वॉइस रिकग्नाइजेशन के प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, और ऐसे ही आईओटी के अंदर आए थे तो रोबोटिक्स, और फिर सेल्फ ड्राइविंग की उसमें आ जाते हैं। एक आम इंसान के लिए जो एआई हमारी उसके अंदर होती है प्रोग्रामेटिकल। और फिर आगे आ जाते हैं तो भी हिस्ट्री के अंदर अलग अलग डेफिनेशंस भी आई हैं कि एक का ये बोलना था कि अगर फिर बिल्डिंग अगर फिर हम मशीन्स पे आ जाते हैं तो क्या मशीन्स ऐसी हो जाए फॉर एग्जाम्पल कि वो इंसान की इंटेलिजेंस से वो जो हमारे फिर वर्क होते हैं वो एआई से हमारे हो सकें। और फिर आगे डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो फिर वो मेथड्स पे मल्टीपल, या अगर हम फिर मेथड्स को इकट्ठा फिर रखते हैं और फिर जो उनका फिर रिजल्ट आएगा उसको हम इंटेलिजेंट फिर हम मान लें। आगे की स्टडीज़ के ऊपर आते हैं
तो फिर वो फॉर एग्जाम्पल इंसान की सेंस वगैरह के हिसाब से हो जाता है कि वो जो स्टेप वो AI अपने उस पर अपना ले सके कि हाउ टू अचीव इट्स गोल्स। और अगर फिर एंड के अंदर आते हैं तो स्मॉलेस्ट जो AI की है अपना डेफिनेशन जो हमें अपने मिलेगी इन वर्ड्स, तो वो ये है AI इज एन एनार्जी ऑफ द मेथड्स। अच्छा, तो आई एम गोइंग टू टेक अ कपल ऑफ स्टेप्स बैक, क्योंकि जो मुझे आगे जो जिसके बारे में बात करनी है वो थोड़ा सा से कनेक्टेड है, सो आई वांट टू गो बैक हियर, ठीक है। अच्छा, जो अभी आपने कोट सुने, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे थे कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप के थे कि भाई बच्चे पैदा करने लगेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर स्केरी भी थे कुछ कि यार मतलब AI इफ इट्स नॉट डन राइट, ठीक है, it can become dangerous, because हम जो है we are starting to depend on AI as so much that we are going to start to think that it is perfect, but it's not perfect. So so there are extreme voices on both sides, ठीक है। और जब भी extreme voices होते हैं ना कि भाई कोई कह रहा होता है बहुत ही बुरा है और कोई कह रहा होता है कि बहुत अच्छा है, so the truth is always somewhere in between and it's nuanced, ठीक है। So this presentation is sort of an attempt, a very short attempt to kind of lay out कि भाई क्या हो रहा है अभी, किन चीज़ों पे काम हो रहा है, and then hopefully this can start a conversation within our greater team कि भाई क्या हो रहा है, and people, there are people here who know a lot about AI, ठीक है, then there are people here like me who don't know a lot about it, okay. So this is just an introduction for everybody to kind of start the conversation going and see what we can do with it, what direction we can go in, and my suggestion of what direction we could take, ठीक है। तो एजेंडा का आफान ने आपको बताया। अभी फिलहाल जो AI, अगर किसी कॉमनर से पूछा जाए जिसको नहीं पता कुछ भी AI के बारे में, AI क्या है, तो वो बताएगा कि AI स्पीच रिकग्निशन है, AI जो है वो Siri है, AI एलेक्सा है, AI वाटसन है, ठीक है, और GPS नेविगेशन इज आल्सो फॉर्म ऑफ AI। वो मतलब जो कॉमन एप्लीकेशंस है उनको पता है, वो टू देम दैट इज AI, ठीक है। But then there are, if you get technical, there are several definitions out there for AI, and these are more, techie definitions, but, let's just quickly go through them. Building machines that perform tasks normally requiring human intelligence. Very broad definition of AI, okay? A set of methods that result in behavior that we may consider intelligent. Again, another definition. A study of common sense world and how a system can find out how to achieve its goals. Another definition, which is very general, but kind of abstract. Okay. And then there is this definition, which is AI is an anarchy of method. AI is not one single thing. AI is a lot of different things. Okay. This presentation is going to try to talk about what are those things. ठीक है, ये एनार्की ऑफ मेथड्स क्या है। तो फिलहाल जो है दिस एनार्की ऑफ मेथड हैज टेकन सेवरल फॉर्म्स। देयर आर 3 मेन फॉर्म्स, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज बेसिकली AI, जहाँ पे आप जो है वो जो लॉजिक है ऑफ थिंकिंग, यू कोड इट एंड यू क्रिएट अ मशीन आउट ऑफ इट, ठीक है। तो लॉजिक इज बेसिकली फॉर कीपिंग इट वेरी सिंपल, लॉजिक इज इफ देन एल्स। अगर ये हो तो ये करना, अगर ये हो तो ये करना, अगर ये और ये हो तो ये करना, दैट इज लॉजिक। सो इनिशियली जब 50s में AI बनना शुरू हुआ था, परसेप्ट्रॉन याद है जिसके बारे में बात की थी, दैट वाज अ लॉजिक बेस्ड मशीन, ठीक है। इट वाज ऑलवेज ऑल अबाउट लॉजिक, बट लॉजिक में AI को, ह्यूमन ब्रेन को लॉजिक में रिप्रेजेंट करना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी टीडियस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। The next jump from logic was statistics, ठीक है। तो बेसिकली you create models, you fit models to data, और ये कि and then based on that you make predictions, ठीक है। तो आपके पास जो है वो डेटा है बहुत सारा, that's where big data comes in. You try to plot it, and then you create some sort of a pattern out of it, and then based on that pattern you try to predict कि future में जो है अगर X ये है तो Y क्या होगा based on that pattern, and that was AI
in second form, ठीक है. ये चीज़ जो अभी भी इस्तेमाल होती है, अगर आप देखें बिग डेटा स्पेशली बिजनेसेस में, you know, there's a lot of AI, a lot of this being done when it comes to predictive analysis and stuff like that. You know, businesses do that, but you know, it's not as simple as a straight line. There's a lot more complexity to it, but it's in at the core it's statistics. ठीक है जी. उसके बाद जो है हमारे अगला जो स्टेप आया वो आया biology, and this approach was inspired by the making of a human brain. ठीक है. How does the brain work? So it was inspired by brain, and then we started to hear about terms like neural networks or deep learning. ठीक है. So basically the idea was that इसका वो चलता है, हाँ चलता है, लेकिन इसमें नजर नहीं आता. हाँ ये रहा. अच्छा. So the idea was that, you know, जब भी you know, when a person, you know, we're talking about vision in terms AI in terms of vision. ठीक है. जब हम किसी चीज को देखते हैं, when a human eye sees something, it creates an image, it creates an impression on our visual cortex, and the visual cortex is part of the brain, and that's where images are translated into consciousness या thoughts, या you know, we understand images through that process. ठीक है. और जब साइंटिस्ट ने जो है उस विजुअल कॉर्टेक्स को स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि भाई the visual cortex has several layers. ठीक है. There's a layer and each layer has its own function in terms of कि जब इमेज हमारे पास आता है किसी की, हम देखते हैं कुछ, तो वो हर एक लेयर का एक फंक्शन होता है कि okay, so we'll talk about it. I don't want to jump ahead of me. But basically हर layer का एक function होता है, ठीक है, and then that's how images are processed. So ये तीन जो methods थे, इसके through you know, this is how AI evolved from the 50s to the 80s and now to 2000s. And so right now अभी जो हमारे पास AI चल रहा है वो combination of, ये तो almost चला गया है, अभी combination of जो है statistics है, which is mostly oriented towards big data, predictive analysis, business data, and that sort of stuff. And then biology, which, you know, we see a lot more of it when we look at, you know, self-driving cars, natural language processing, that sort of stuff. ठीक है. तो अभी जो है, this is where we are at in terms of क्या methods इस्तेमाल हो रहे हैं. अच्छा, early days में जो है, जब 50s में 80s में, when we were talking about logic based AI, ठीक है, we weren't yet at statistics. तो AI जो था वो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा जो था वो मशीन लर्निंग था, और उसका भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हिस्सा जो था वो डीप लर्निंग था. मोस्ट ऑफ इट वाज, यू नो, लॉजिक बेस्ड, एंड सो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट वाज डीप लर्निंग. ठीक है. ये दिस वाज बिटवीन 1950s एंड 1980s. उसके बाद जो है 90s to 2000 में मशीन लर्निंग became a little bit bigger. ठीक है. उसका जो uses थे थोड़े से expand हो गए, but deep learning was still very very small. ठीक है. And we'll talk about what deep learning is. ठीक है. अच्छा, and then when we go to 2010 के बाद एकदम से explosion आया, and this is where deep learning became the majority part of AI. ठीक है. तो उस वक्त जो है फिर logic और stats जो है वो थोड़ा छोटा हो गया. Now everything, almost all the AI applications that we see are based on neural networks and deep learning. ठीक है जी. So this was the progression from the 50s to, you know, where we are at now. Is everybody with me, by the way? I don't want to be too technical. I don't think I am too technical. मैं खुद नहीं समझ में आता. ठीक है. Okay. अच्छा, so let's talk about deep learning, the deep learning revolution. What happened? ठीक है. जैसे कि मैंने बताया कि deep learning or neural networks is based on our brain. ठीक है. And we are going to take the example of images, how they are processed through the visual cortex, and we talked about how the scientists were able to discover that the visual cortex has layers, okay, and each layer has its own function. So, you know, roughly they said, अच्छा जी के पहला layer जो है जब हम किसी image को देखते हैं तो वो उसके edges निकालता है, ये इसके edges ये हैं. ठीक है. मसलन आपने अगर जो है एक बॉक्स, एक स्क्वायर को देखा है तो इट विल बी एबल टू फिगर आउट द एजेस. अगला लेयर जो है उसके फिर सिंपल शेप्स को प्रोसेस करता है, एंड देन अगला लेयर कॉम्प्लेक्स शेप्स को प्रोसेस करता है, एंड देन द लास्ट लेयर मे बी
recognizes faces and complex objects. Okay, so this is a very rough idea behind how our brain works. Okay, so the scientists, what they did was they took this and they then started to use it to build a system around it, and that's where they came up with what they call convolutional neural networks. The convolutional neural networks are basically based on this idea, जिसमें आपके पास जो है वो जो neurons के layers हैं, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, ठीक है, and you basically what you do is when you want to process an image, for example, an image of a dog, you run it through this neural network, ठीक है, and then it gives you and it runs through a classification model, and then at the end it gives you an answer in terms of probability, ठीक है. तो यहाँ पे जो है ये आपको जवाब दे रहा है कि 90% चांस है कि ये कुत्ता है और 10% चांस है कि बिल्ली है, ठीक है. And then you take those answers from the neural network and then you use it as you want to use it. So if for a business या किसी के लिए 90% is good enough, they can say अच्छा ठीक है भाई कुत्ता है. लेकिन 90% हो सकता है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो अच्छा नहीं है क्योंकि पता नहीं है 90% of the time it's good, 10% of the time एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है. So maybe that's not good enough. So it depends on the application and whether you want to use it, ठीक है. अच्छा, अब ये आपका जो है this might be your level of accuracy. There are ways of throwing training data at it to make it more accurate. We'll talk about that as well. But basically this is the general principle of how neural networks work, ठीक है. अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं. Don't want to get into it right now. अच्छा, so ऑब्जेक्ट अच्छा, अब हम इसकी जो डीप लर्निंग है इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि अभी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है. ऑब्जेक्ट रिकग्निशन हैज बीन वन ऑफ द सक्सेसेस ऑफ डीप लर्निंग, ठीक है. टू बी एबल टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट एंड रिकग्नाइज कि क्या है, वह गाड़ी है, टेबल है, soccer ball है, क्या है, ठीक है. So that is one of the applications where deep learning has been able to make a huge stride, and there are lots of applications that do that. So right now, as an example, you can upload a picture to Google, and the convolutional neural network जो कि Google इस्तेमाल कर रहा है, which is kind of like this, it will run the picture through that network and tell you कि भाई ये क्या है, इस picture में क्या है, ठीक है. And that's kind of what's happening in the background. This is very simplistic, by the way. There's a lot more that goes into it, but this gives you an idea of what's going on in the background, ठीक है जी. अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों को जैसे हम सब ने यूज़ किया है गूगल इमेजेस. यू कैन से मुझे फाउंटेन्स की तस्वीरें दो, इट विल कम बैक एंड गिव यू अ लिस्ट ऑफ फाउंटेन्स, ठीक है. हाउ डज इट डू दैट? इट्स मतलब ये जो तस्वीरें हैं, दे आर नॉट ह्यूमन लेबल्ड. व्हाट हैपेंस इज इट गेट्स ऑल दिस पिक्चर्स, इट रन्स इट थ्रू दिस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और फिर वो उसको लेबल कर देता है, अच्छा इसमें फाउंटेन है, फाउंटेन है, फाउंटेन है, फाउंटेन है. एंड देन व्हेन समबडी गोज एंड आस्क्स कि भाई मुझे जो है वो कायद आज़म की तस्वीर दो, तो वो कायद आज़म की तस्वीर आपको दिखा देता है कि उसको पता है कि ये लेबल्ड है कायद आज़म के साथ, ठीक है. अनदर वन इज फेसबुक, फेशियल रिकग्निशन, एवरीबडी नोज दैट, आई एम श्योर, ठीक है जी. So these are just a couple of very common applications of deep learning, object-oriented application of deep learning and neural networks, ठीक है जी. अच्छा, तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये खुद ब खुद तो नहीं बन गई. Somebody trained the network, the neural network, to be able to make good predictions, ठीक है. So where did the training data come from? Training data कहाँ से आया? ImageNet जो एक service है which has a huge database of images, millions of images that are labeled by humans, ठीक है. So most of the training data that companies who are doing a lot of work in AI, they get it from ImageNet, ठीक है. So look it up after the talk, maybe you'll see something, ठीक है. तो ImageNet से जो है बहुत सारा इमेजिंग डेटा आता है जो कि ह्यूमन लेबल इमेजिंग डेटा है, ठीक है. By the way, companies also use paid. There are companies out there that उनका सिर्फ काम ये होता है कि वो वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं टू ट्रेन योर मॉडल, सही है. तो ऐसी कंपनीज जो कि चाहती हैं कि उन्होंने एक मॉडल बनाया है एंड दे वांट पीपल to train that model, you can go out and now get that service and say अच्छा ठीक है मुझे 5 लोग चाहिए, मुझे अपना मॉडल ट्रेन करना है,
and there are companies who give you that sort of resource to be able to train your model. ठीक है? ImageNet is one of those services. ठीक है? Like I said, it is used to train machine learning programs how to recognize object. अच्छा, कुछ अर्से पहले जो है वो there was a competition that was used to happen a while back, जिसमें जो है वो ये कहते थे कि ImageNet का डेटा मतलब कंपनीज अपना मॉडल लेकर आती थी और you would apply that model on the ImageNet data, ठीक है, to see how accurate you are. And if you look at the graph in terms of accuracy, how it has increased. And so we're talking about 2011. The accuracy was, the error rate was 25%. 2011 से लेके अभी 2019 तक का data, if you look at the level of error, it has gone down drastically. Okay, so there has been an explosion of really good performing machines that's out there. और ये जो है, this is where ये देखें ये जो चल रहा था, all of a sudden you had a huge drop. This is where deep learning came in. Okay, and so once deep learning came into the picture, everything started to get better, and ever since it's only gotten better as the models, the deep learning के model जो है और ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, and they're able to predict and perform at a really good success rate. ठीक है, तो उस लिहाज से जो है ये जो error rate है वो कम होता जा रहा है. ठीक है जी. अच्छा, so अब ये जब ये result जब आए तो all of a sudden there was a sensational news. Computers are now better than humans at recognizing and sorting images. Okay, so this hype started to come back again, and this is we're talking about 2015 में जब जो है अभी पूरा इतना error rate नीचे भी नहीं आया था. So this was we got into the spring or the optimism part of AI, and we started seeing all this hype. अच्छा, object recognition उसके बाद जो है next step जो उसका बना, it evolved into image captioning. ठीक है, अब ये हुआ कि what they did was they took object recognition where they could recognize object and they merged it with NLP, natural language processing. ठीक है, and they came up with what's called image captioning. So now you could give it an image, so like this one here, एक image दें और वो आपको घूम के देगा a person riding a motorcycle on a dirt road. Obviously this requires the network. This is not just one network, this is a combination of AIs. ठीक है, एक जो है recognize कर रहा है कि क्या उसके अंदर, दूसरा जो है उसको convert कर रहा है natural language में. So you could now caption images based on that. ठीक है जी. So this was the next natural step from object recognition. And then there was another one. Google's AI can now caption images almost as well as humans. So this is a trend as you can see. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो अगला step आया, this computer vision and deep neural networks have now allowed self-driving cars to recognize objects on the road. So the next step in the last few years has been self-driving cars. So we all know Tesla है, बहुत सारी और companies जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं. And again, all जो major technology in the back है, it's deep learning, it's neural networks. ठीक है जी. And there's more hype around it. ठीक है. Self-driving cars from 2020 you will be able to become a permanent backseat driver. Hasn't happened, but these were the predictions. 10 million self-driving cars will be on the road by 2020. A year from now, this is in 2019. A year from now, we'll have over 1 million cars with full self-driving software, everything. So he's talking about full autonomy. And we all know that full autonomy does not exist. ठीक है, we'll talk a little bit about that as well quickly. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद जो है, let's talk a little bit about NLP. NLP also evolved, and examples were Watson, Siri, Alexa. These are things that we already know about. Watson के बारे में पता है. Watson जो है वो IBM, ये Siri Apple का है, Alexa जो है Google का है, right? Watson was IBM's jump into AI. ठीक है, and what they did was at that time to create the hype, Watson ने सबसे पहले जो है वो क्या नाम है उसका, जिसका बंदा जो था, Gary Kasparov.
उसको हराया चेस में, सो पीपल वर लाइक वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हरा दिया, लेकिन अगर आप उससे लूडो खिलवाएं तो हार जाएगा, बिकॉज इट ओनली नोज, it's trained on chess, so it knows chess, so it's not intelligent, just knows what you trained it on. ठीक है जी? So this, so national language evolve हुई, ठीक है? अच्छा, so now after all of this, where we are at right now, the question is, can AI really understand what it reads or hears? ठीक है? तो अगर जो है वो मतलब वो आपको जो है आप जो बोलते हैं वो लेके उसको जो उसके मॉडल है उसके अगेंस्ट प्रोसेस करके आपको कुछ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी तो कर देगा एट सम लेवल, बट डज इट रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यू नो, डज इट रियली, कैन इट रियली, डज इट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, द रियल मीनिंग ऑफ, सही है, कैन इट रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई गिर जाए, मैं कहूँ बहुत खूब, ठीक है, तो एआई को रियली पता है कि आई वाज बीइंग सार्कास्टिक, कि आई डिडंट रियली मीन बहुत खूब, मेरा मतलब था कि बहुत बुरा, ठीक है? कैन इट रीड बिटवीन द लाइंस? दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आई डोंट थिंक वी आर देयर येट, सही है? So another is, why doesn't it perform well on the reading comprehension test? I mean, it's doing better, but it's not there yet. And again, the point is because it's not able to process speech, the meaning of speech as we are as humans, and you know it's getting there, but it's not there yet. ठीक है जी? अच्छा, ImageNet, ImageNet जो है वो the system needs, so basically you know, we're talking about how machines learn, and ये जो data है ImageNet का वो इस्तेमाल हुआ था. Again, I'm not able to read what it says here, so let me try to move it around. नहीं, ये नहीं होगा. Okay, let's move on to the next slide. Huh? Acha, so let me just go back. Okay, so जो machines जो learn करती हैं, they are not learning on their own. You have to send them a lot of data, training data. That training data, ये human labeled photos हैं that need to be thrown at the machine to train them. So humans are required in training the machines, and then not only that, we also need humans to be able to, you know, first of all create the neural networks, the structure of the neural networks that they are going to use, और फिर उसको जो है fine tune करना to make sure that they provide the right results. So yeah, machines are learning, but they require a lot of human intervention to learn. So yeah, so again, the question is, you know, if I'm a human and I'm teaching a machine how to do a certain task, as a good teacher, I want to know what the machine has actually learned. सीखा क्या उसने, ठीक है? कि भाई मैंने उसको बताया कि ये जो है वो ये जो तस्वीर है उसके अंदर एक परिंदा है, ठीक है? तो does it really know the meaning of परिंदा, कि परिंदा क्या होता है, ठीक है? अगर मैं एक दूसरी तस्वीर लेके उसमें परिंदा रख के दूं तो क्या उसको पता लगेगा कि ये भी परिंदा है, या ये कि परिंदा एक जगह बैठा हुआ है और दूसरी जगह पर मार रहा है, तो ये कैन इट टेल द डिफरेंस, ठीक है? तो हियर इज एन एग्जांपल. एक मॉडल में जो है एक मॉडल को ट्रेन किया गया है, which is basically the model was supposed to take a picture and tell you whether that picture contained an animal, ठीक है? So here's a picture that contains an animal, and here's a picture that contains no animal, and it turned out that the model performed really, really well. ठीक है? People were like, wow, this is really good. You can give it any picture and it will turn out and tell you कि इसमें जो है वो जानवर है कि नहीं है, ठीक है? And then what happened was कि गलती से जो है किसी ने एक तस्वीर उसमें डाल दी जिसमें कोई पिक्चर नहीं थी, सिर्फ ब्लरी बैकग्राउंड था. And it turned out that the model said कि इसमें एनिमल है, ठीक है? And people started to think कि यार ये कैसे गलती की, तो फिर उनको पता लगा कि what the model, a part of what the model had learned was that कि जब भी ब्लरी बैकग्राउंड होता है तो चांसेस ज़्यादा होता है कि उसके अंदर कोई एनिमल है, ठीक है? तो दिस इज जस्ट लाइक जब आप न्यूरल नेटवर्क को आप ट्रेन कर रहे होते हैं तो बेसिकली यू नो यू हैव अ नेटवर्क, ठीक है? एंड द ट्रेनिंग इज बेसिकली द वेट्स बिटवीन द कनेक्शन ऑफ दोज न्यूरॉन्स, ठीक है ना? तो मतलब और जो वेट्स हैं वो आप देख तो सकते हैं,
एक दो लेयर तक समझ भी सकते हैं, लेकिन when it goes beyond, when there's deep layering or what's called deep learning, at some point it is beyond human understanding to really know कि भाई machine ने क्या सीखा है. Can I tell? I cannot tell by looking at the network because it doesn't mean anything to me. It's just a lot of connections and weights on them. ठीक है? It's when I throw test data at them and see कि भाई क्या results आते हैं तो मुझे पता लगता है कि उसने क्या सीखा है. So this was just by mistake that they found out that the machine what actually learned was that जब ये होता है तो probability ज़्यादा है कि उसमें ये है. ठीक है? So this is just an example. I'm sure that there are other examples there like as well. ठीक है? So in that sense, it's very hard to tell कि भाई जैसे मैंने बताया कि भाई वो जो statistical correlations है network जो create कर रहा है, ठीक है, to recognize an object, what are they? We don't know because the knowledge that's in the network is in the form of weights, or weights don't mean anything to humans. So it's very difficult to tell कि भाई machine ने जो सीखा है वो सही सीखा है, गलत सीखा है, या उसमें जो है जो उसने जो preferences दी हुई हैं वो कहाँ दी हुई हैं, उसके weights जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं है. So it's very difficult to tell that. So it's very so like here, has a caption, a group of people sitting at a bus stop. ठीक है? Now imagine a self-driving car using that image. ठीक है? You can tell what will happen. सही है? So these are just some example. Here's a अच्छा ये problem जो है, I think this has been solved, but this is like an older picture. So basically, there's a fire truck, there's a school bus, fireboat, and a bobsled. ठीक है? लेकिन ये कि to a human, they're not any different. अगर एक human देखता है तो उसको पता है कि भाई ठीक है ये सीधा ट्रक है, ये उल्टा है, ये टेढ़ा है. It's all fire trucks. But to a machine, there are different images because what it's doing under the covers, under the hood, is that just processing pixels. ठीक है ना? अच्छा, here's another example. What they did was they took those pictures on the left, school bus है, एक चीता है और कुछ और है, and they added a very small level of noise into the picture, जो कि बीच में है, ठीक है? And as you can see, by just adding a small noise to a human, that does not make it's not even recognizable, ठीक है, to humans, but to a machine it's a totally different thing. कि भाई अब वहाँ पे जो था वो स्कूल बस थी और यहाँ पे वो ऑस्ट्रिच बन गया, ठीक है? So this is just an example of of the brittle nature of the learning that the AIs have done so far, and a lot of this might have already been fixed. ठीक है? लेकिन ये कि right now we don't know what else is out there to be fixed. ठीक है? And until we know, we are not at the level where we can totally trust AI. ठीक है जी? अच्छा, ये एक और एग्जांपल है कि ये गेम एक बहुत पुरानी होती थी जिसमें आप बॉल बाउंस करता था तो ऊपर से जो है सरफेस कम होता जाता था. तो somebody trained an AI to play this, and it was doing really well. And all they did was they just moved the pedal up a little bit, and it was horrible. ठीक है? क्योंकि again it was playing with pixels, ठीक है, और यहाँ पे जो है it wasn't able to do well. But to a human it doesn't make a difference. इतना सा difference से जो है their performance जो है इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जितनी कि AI के उसमें हुई थी. सही है? अच्छा, again I want to say that these are extreme examples. ठीक है? So it's not as bad as this is right now. The things have gotten better, but still there are a lot of gaps, and we'll talk about those gaps really quickly. अच्छा, and then there's also the adversarial examples, ठीक है, human safety वाले examples. अच्छा, जैसे कि ये देखिए stop sign है, ठीक है? What they did was they basically took some random marks and they put them on the stop sign. पहले वाले में, दूसरे वाले में ये अलग-अलग distances से वही stop sign है, ठीक है? तो 5 फीट के distance में जो है वो stop sign stop से change होके speed limit 80 पे चला गया. Now imagine that you have a self-driving car जिसमें कोई आके जो है if they want to sabotage it and they go do this to a traffic sign, you can imagine the results that it will create. ठीक है? So this is just an example, another example of what we're talking about in terms of when we say do machines
really understand what they're saying. ठीक है? अच्छा, okay, so again, are they actually seeing? Can we even call it seeing? ठीक है? Have they learned the meaning of it? I wonder, again, this is, this is a while back. I wonder whether or when AI will ever crash the barrier of meaning. Okay, so let's talk about the barrier of meaning. What does it mean? And I want to make sure that I don't go over my time. I just have 10 minutes. Again, I don't want to trash it. I'm not here to trash it. The machines are doing really well in some domains. Okay, specialized domains mein, they have made a huge difference. Okay, what we are talking about here is that when it comes to matters of human safety and things like, that involve humans, okay, they're unreliable and they can be easily fooled and don't always learn what we want to teach them. Okay, and it's difficult to know what they have learned. And it's not extracting the same meaning that we human attached. And then, that is basically the source of most of the errors. So yeah, so how can we get machines that actually learn what we mean by photos, by language, and so on? I mean, what do we do? ठीक है, ये जो है, ये एक problem है. What do we do about it? How do we get to human level AI? It seems the field is wide open right now. Human level AI is, again, I want to qualify it. Maybe that's not the object of the businesses. The bade businesses, that's not what they want to do. Okay, because there's not money to be made there. Okay, imagine a computer who's an AI who's as intelligent as a small baby, doesn't need to sleep, doesn't need to eat, doesn't get bored, doesn't get tired, and doesn't get emotional. Okay, wouldn't that be super intelligence? Matlab, somebody who can do something as intelligent as a little child and doesn't have all those human shortcomings. I think that's not what's desirable, but we do need to get better than what we are right now to be able to, progress from where we are. Okay? So how do we get around the challenge? The idea of teaching machines the concepts. So what are concepts? Okay? Concepts that are richer than just teaching perceptual categories like school bus, fire truck. So concept is basically, it's self-explanatory, a concept of a projector. ठीक है, भाई अगर आप उसको एक बताते हैं तो वो आपको तो बता देगा ये प्रोजेक्टर है, लेकिन ये प्रोजेक्टर क्या है? What is the concept of a project? Does it understand that? ठीक है, does it know that when you turn it on, it will throw light and you can see images? Does it understand that? So the concepts of things that it sees is what, we need to be able to have machines learn. This is just one approach. There are other approaches as well. Okay. So imagine the concept of walking a dog. Okay. So to a machine, if you teach a machine, show me the picture of people walking dogs, so it could come up with this one, this here. But to a human, walking a dog is a concept. Okay. I mean, it's the concept is that aap apne, again, these are Western examples. We don't do it here, but I didn't have any other pictures. ठीक है, कि भाई आप जो है आप कुत्ते को चला रहे हैं, सही है. But to a machine, is this also walking a dog? The guy is running; it's not really walking. ठीक है, but to a human, it is walking a dog. ठीक है, what about this? It's also walking a dog. ये भी है, ठीक है, ये भी है. A dog walking a dog. ठीक है ना? So if it gets the concept, it knows that this is all the same, but it's not there yet, right? Acha. And so one approach to going beyond that barrier of deep learning, जो कि अभी हमने बात की कि भाई how it can be fooled, how it's not 100%, we're not even 100 is too high up. It's not accurate. There's some brittleness there. One approach is to teach it, concepts or the concept of concepts. Okay. So an analogy is comparison between two objects or systems of objects, and the highlights that highlight the respects in which they are thought to be similar. ठीक है. An analogy जो है वो ये है कि मसलन
अगर आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेनिस बॉल, ठीक है, ऐसे को जिसको टेनिस बॉल उसने कभी नहीं देखी है, ठीक है, आप उसको किस तरह कॉन्सेप्ट बताएंगे उसका, यू विल हैव टू मेक एन एनालॉजी, ठीक है। टेनिस बॉल जो है वो फुटबॉल की तरह होता है, छोटा होता है, सो यू मेड एन एनालॉजी, राइट, कि भाई देयर इसकी तरह होता है, ठीक है, और छोटा होता है, मे बी बाउंस ज़्यादा करता है, या whatever, you make some analogies, and so use analogies to create concepts. And when you have concepts as human, when we have those concepts, that is what we used to think, ठीक है। जब अगर मैं कुछ सोचता हूँ, अगर मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, I will not be able to think, ठीक है। So without concept there are no thoughts, and without analogies there are no concepts, ठीक है। You need analogies to be able to create concepts, and you need concepts to be able to think, सही है। So that is the idea of creating concepts without machines, सही है। How to form flexibly, how to form and flexibly use concepts is the most important open problem in AI today. So this is, again, I want to qualify, this is one approach to it. There are lots of other approaches that are being used to go beyond the barrier of deep learning that we talked about, the problems with deep learning, ठीक है, जो 3 approaches हमने बात की। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो, this is an example that I got from a book, and I thought it was a really good example. If you see, there's a lot going on here. See, a lot of different concepts. There's a guy standing on a scale, वो अपना weight check कर रहा है, ठीक है। ओबामा ने जो है अपना पाँव उसके ऊपर रखा हुआ है, पीछे लोग जो है वो खड़े हुए हंस रहे हैं, और there are some mirrors here, ठीक है। Now, if you feed this picture to a computer, what is it going to get out of it? ठीक है, does it understand the concept of physics? Does it know that ये जो उसके ऊपर खड़ा हुआ है अपना वजन चेक कर रहा है? Maybe अगर आप उसको जो है बता दें, क्या उसको पता है कि ये जो पीछे से ओबामा उसके पाँव उसको दबा रहा है, तो he's trying to make a joke, and the people behind it are smiling at that joke, and maybe that joke is a little bit more pronounced because of the stature of the person who's making the joke, कि भाई वो president है, इसलिए लोग ज़्यादा हंसेंगे क्योंकि थोड़ी सी चापलूसी भी करनी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, these are things that for a human they're automatic. I mean, we as humans, when we look at it, we can deduce a lot of information by just looking at this picture, which right now is just beyond machines at this point. Okay, so until they get to this concept, the concept of physics, there's a concept of physics going on, there's a concept of mental models, and generally vast knowledge, abstraction, analogy, all that. ये concept जब तक जो है machines को समझ में नहीं आएंगे, या उनको हम जो है we don't find out a way of teaching them those concepts, it's going to be very difficult for them to even general intelligence, GI तो दूर की बात है, to be able to be reliable enough for us to trust as humans, to give them our lives, put our lives at their behest. ठीक है जी? अच्छा, so that's kind of like a very basic background of where AI is right now, okay, and what are the challenges right now, and what is being done at this point. Some parting thoughts. So some questions that I put that people usually ask: what exciting problems in AI are still unresolved? Okay, and the answer is nearly all of them at this point. Okay. Yeah, I mean, there are really good applications out there, and companies are doing a lot of good work, and there are some really good problems that have been semi-resolved, but you wouldn't call them perfect solutions. Can I be creative? Can we have creative? Can AI write poetry? Can AI write music? Can AI write can it write you an essay? The answer is yes, it can. ठीक है, ChatGPT सबको पता लग गया है, ठीक है, so it can, ठीक है, it can create original content, yes, but is that creativity? Does it know that it's being creative? ठीक है, अगर आप उससे पूछेंगे कि ये जो आपने मतलब does the machine really recognize creativity? Does it understand or appreciate the content that it has created? No, it doesn't. ठीक है, and I'm not sure if there's an application to that, whether we really even care कि भाई ठीक है, नहीं समझता, ना समझे, मुझे तो मिल गया ना, मेरा पेपर तो लिख दिया उसने ना,
ठीक है, but these are problems that have to be resolved for us to go to the next level. ठीक है, will AI cause massive unemployment? Probably not. Give and take, and the give and take is, yes, it will create some industries to go extinct, but then जब आप AI पे काम करना शुरू करेंगे तो it's also going to create new jobs, new employment. So it's going to be some sort of a net effect between the two. ठीक है जी. How terrified should we be about AI? Not much about a takeover, but a lot about its limitation, autonomy and stupidity. ठीक है जी. At this point, at least, maybe 10 years down the line, that might change. ठीक है. Will fully autonomous self-driving cars be available soon? अच्छा, there are 5 levels of autonomy. ठीक है, पहला जो है वो तो cruise control सबको पता होगा. That is the first level of autonomy. The second level is जहाँ पे जो है वो आप वो predictive braking वगैरह होती है, जिसमें आपके आगे गाड़ी हो तो रुक जाती है, ऐसा कुछ. That is second level. Right now we are at level 3, and full autonomy is level 5. ठीक है, so we are at level 3, और मतलब फुल ऑटोनॉमी के जो 90% प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गए हैं. जो 10% प्रॉब्लम है वो रह गए हैं, लेकिन वो 10% वो ऐसे हैं जो कि 90% और टाइम लेंगे. ठीक है, so those problems are still out there. So it doesn't exist right now. It requires, I'm going to qualify it because I was told that it doesn't require human intelligence. So I'm going to say it requires semi-human level intelligence. That's not out there. ठीक है, it requires common sense. ठीक है. How far are we from human level AI? Really, really, really far away right now. ठीक है. अच्छा. And then, you know, it's difficult to predict because, you know, predictions are hard, especially about the future. That was a joke. Nobody got it. Predictions are about the future. Okay. Acha. So people worry about the computer. This is the quote. People worry about computers, that computers will get too smart and take over the world. The problem is that they are too stupid and they've already taken over the world. Okay. Abhi jo hamare paas AI hai, I mean, if you look at it, you know, it makes mistakes, but you know, it's everywhere. Okay. AI has come a long way. So summarize it really quickly. It has come a long way. In the last decade or so, there are some amazing and revolutionary AIs out there. There's no doubt about it. We don't want to, you know, we don't want to say that it hasn't made a difference in our lives. It has made a huge difference in everybody's life. So there's a lot of good work being done in that area. Businesses at the cutting edge of this technology are doing very, very well. We know that. Okay. But there is a big gap. There are big gaps, and the important problems are still unsolved in the quest for robust and ultimately general intelligence, which, you know, again, we're not sure if that's you know, that's really something that people want to strive for. But you know, robust AI and general intelligence, deep learning is hitting a wall. Deep learning doesn't look like it's going to be the solution to the problems that are remaining at this point. Okay, it just doesn't seem to be working. It's more brute force. You see a problem, you throw more training data at it. You see a problem, you throw more training data at it. It's just not working because, you know, problems are, मतलब जैसे टाइम गुजरता है ऐसे नए प्रॉब्लम सामने आते हैं कि it's just impossible to keep up with it. ठीक है. And so deep learning may be hitting a wall, and the wall is that all important barrier of meaning. It needs to understand what it's saying, what it is dealing with. Okay. General intelligence is far, far away and perhaps not the ultimate goal. Like I said, maybe it's not the goal. Maybe we just want semi-intelligence to be able to do what we need AI to do. There are a lot of baby steps in solving the problem. You know, to get to semi-intelligence, there's a need to instill concepts and true cognitive processing into AI. We talked about concepts. It's just one approach. And the approaches we discussed, logic, statistics, and deep learning may not be able to fill those gaps. The concept of concept is just one approach. A new thinking is needed because the space to fill those gaps it's wide open. There's not a lot going on, at least not in the public domain. हो सकता है, you know, अगर US military कुछ कर रही है छुपा के,
जब इंटरनेट पे भी किसी ज़माने में करे तो बाद में आया था सामने में भी they are doing there's some research going on at that level. It's not public, it's not even commercial. Maybe companies are doing it but they haven't come out of it. Okay, matlab beyond these three approaches there hasn't been a lot that has been seen. There are books, there's a lot of information out there, a lot of very interesting reading that's out there. Okay, and that is where the real challenge is if you're looking for true vertical innovation. Okay, if companies want to innovate, not just copy, not just expand horizontally but vertically, these are the it's out there, it's all open. Okay, and personally I believe as a company we should invest in the quest to get up to speed with the traditional approaches. I mean, we don't want to, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम उस पर क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है हम नहीं काम करेंगे. It's making a huge difference. We want to invest in the traditional approaches. When I say traditional approaches, I mean deep learning, statistics and all that. We want to do some of that as well, but we also want to think and work outside the confines of those approaches to be able to do some original research, to be able to see कि भाई ठीक है कहाँ जा रही है field. Can we, if we are not out there to invest, to invent, but can we at least get a head start? कि जब वो आए तो हमें पता हो कि अच्छा हाँ ठीक है, we know where this is going. ठीक है, that's kind of that is the approach that I want GitLab to take. Work on existing technologies, use it, create products around it, but also invest in the next wave of what's coming out in AI. Okay. Acha, generally for the geeks among us, when it comes to AI, and this is just what I think, it's like what we are doing right now is just some inline coding at this point. उसमें हम डालते जा रहे हैं और फेंकते हैं और hard coding करते हैं और training data and nothing more. We need some dynamism. So anyone who's up for regional thinking and dynamism, let's talk, let's have a discussion. Thank you. किसी को कोई सवाल वगैरह कुछ? I went over time, sorry, but there was a lot of information here. I mean, we still have just skimmed the surface. There's nothing here. Again, like I said, it's just an attempt to make sure that people know where we are, where we came from, and where we are heading. किसी को कोई सवाल है online या यहाँ पे तो please पूछ लें. Again, it's not going to hurt your reviews. जी, I have one. ये 5 levels of autonomy, I think it was. What are those? And you said full autonomy is impossible. So why are we saying that? So the 5 levels of autonomy, मुझे 4-5 के 5 याद तो नहीं है, लेकिन number 5 is full autonomy. ठीक है, and number 4 is full autonomy in a controlled environment. ठीक है, तो आप एक controlled environment में अगर full autonomy देते हैं vehicle को, वो number 4 है. और number 5 है full autonomy in any environment. ठीक है, and so the argument is that it's not possible is because right now full autonomy के लिए जो है the vehicle has to be ready to handle any environment, any condition, yeah, any unseen, untrained data that's thrown at it, any unseen, untrained incident that's thrown at it, and it's not fully trained for that right now, and that's why we say that it's not possible because it's not trained, and it's not even possible to have that much training data to be able to train that. So we require a different approach for full autonomy. Yeah. Okay, सर हारिस, मेरा एक क्वेश्चन है. अगर ये मतलब एआई को हम किस पर्सपेक्टिव की तरह देखें, मतलब किस डोमेन में देखें, ऐसा इसको ऐसे देखें? हारिस जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है. सर मतलब एआई को हम किस डोमेन में देखें, या तो हम अपने जो कंपनी हमारी सॉफ्टवेयर के इस डोमेन में देखें कि एक हमारे पास कोई आवाज आ रही है, मतलब कि इस डोमेन में देखें कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एक क्लाइंट आता है हमारे पास कि मुझे एक ये वेबसाइट बनानी है, ठीक है,
तो अगर हम इस डोमेन में देखा जाए कि एआई जो है हमें ये एक सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बना के दे दे, क्योंकि इसमें टाइम खर्च हो, टाइम की लिमिट जो है वो कम होगी, क्या हम इस डोमेन में एआई को देखें या फिर हम एप्लीकेशंस देखें? फॉर एग्जाम्पल की देख लें कि भाई, हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी जी। हाँ, तो या तो फिर हम इस डोमेन में देखें एआई को, फॉर एग्जांपल एप्स की जो हम यूज़र को प्रोवाइड कर सकें। अगर एक एग्जांपल एग्रीकल्चर की ले लें कि भाई हमारे पास ये ज़मीन है, ठीक है, ये हमारे पास वेदर कंडीशंस हैं और ये हमारे पास ज़मीन की लैंड की कंडीशन है, तो आप ऐसा कोई इजी स्टेप्स बता दें यहाँ हमें कि यहाँ पे जो है ये फूड एबल हो जाए, यानी कि ग्रो कर सके इस पे फूड वगैरह। तो इस डोमेन में देखा जाए या फिर हमें सिर्फ अपने ही डोमेन में रह के एआई के बारे में देखना चाहिए? हारिस है, ये बहुत अच्छा सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास इसलिए जवाब नहीं है कि अभी जो है वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट के व्हाट डोमेन, हम किस डोमेन में काम करें, ठीक है ना। तो अभी जो मैंने अभी कुछ देर पहले जो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हमारी जो एज अ कंपनी जो हमारा गोल है, कहाँ गया, कि एज अ कंपनी वी शुड इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस में, इन टर्म्स ऑफ जो अभी हमारे मतलब डीप लर्निंग और यू नो बिग डेटा एनालिसिस, और उसमें दोज आर द एरियाज दैट वी शुड एटलीस्ट स्टार्ट टू गेट इनटू सो दैट वी कैन गेट आवर एपेटाइट वेट, ठीक है। अब उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या होंगी, क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, वेयर व्हेन अ कस्टमर कम्स टू अस एंड दे आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक AI enabled applications, then we can provide those services because we know how to do that. Right now we don't know how to do that. So that's one area, एक domain जिसमें हम काम कर सकते हैं। उसके आगे जो है, क्या हम फिर उसके बाद जो उससे हम नो हाउ निकालें, क्या हम जो है कैन वी क्रिएट प्रोडक्ट्स अराउंड इट, कैन वी कम अप विद आवर ओन सॉल्यूशंस अराउंड इट, दैट्स अनदर डोमेन। उसके अलावा जो थर्ड वाला जो है, जो कि काइंड ऑफ लाइक स्टिल it's out there, but I still want to, I want people to at least aspire to it, is to think outside the confines of these approaches, these three approaches, and see if we can, we can do some research, some real research into this idea of concepts. And there are also other approaches out there that are based on, teaching machines the true meaning of what they're seeing, hearing, what does it mean to, look at an object, what जो उसके जो concepts हैं उसको समझे। तो ये मतलब बहुत ही high level के जो अभी फिलहाल जो ideas हैं that are out there, we're not sure what domain we can apply it in. I think as we work on it, we'll have to find that out. आपने कहा कि जो AI है वो डेटा ड्रिवन है, तो how does it comply with privacy? Data driven है, I'm not sure if I understand. देखो, you mean in terms of training data? हाँ, अच्छा, तो अभी जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं ट्रेनिंग डेटा, वो तो मतलब जनरली जो है पब्लिक डोमेन में से लेती हैं, जैसे मसलन इमेजनेट का मैंने बताया, दैट इज समथिंग दैट कंपनीज यूज अ लॉट। देयर आर आल्सो अदर सर्विसेज लाइक दैट, ठीक है। फिर ये कि आपके पास जो है वो इंटरनल कंपनी डेटा भी होता है, ठीक है। व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन व्हिच इज स्पेसिफिक टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अपने मतलब ये कि आप जो है, फॉर एग्जांपल हम एक AI एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं व्हिच इज गोइंग टू डू the job of making which is going to make the HR's job easier, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई उनका कोई एक प्रोसेस है, हम चाह रहे हैं कि AI के थ्रू जो है ऑटोमेट हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तब उसका डेटा जो है हो सकता है कि इनिशियली जो हम मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो पब्लिक डोमेन से लें, लेकिन जब हम उसको जो है स्पेशलाइज करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो दैट इज डेटा दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर विद इन द कंपनी, राइट।
that time बहुत सारी कंपनीज मेटा डेटा भी यूज कर रही होती हैं बिल्कुल। तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि देखिए जो कंपनी अगर आप जो है वो मतलब अगेन इट्स अप टू व्हाट काइंड ऑफ वेयर आर यू गेटिंग द डेटा फ्रॉम। ठीक है, एज अ कंपनी अगर मुझे अपना मॉडल ट्रेन करना है और मैं जाके जो है दूसरी कंपनीज की साइट्स को स्क्रैप करना शुरू कर दूं, देन दैट्स माय इशू। कंपनी बाकी कर रहा है यूजर लेवल आप यूजर का जो डेटा आप यूज कर रहे हो उसका यूज नहीं, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो अगर मैं अपने इंटरनल यूजर्स का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई नीड टू बी एबल टू हैव देयर कंसेंट टू डू दैट, राइट? ठीक है, सो एज अ कंपनी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि अगर मैं इंटरनल एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मेरे एम्प्लॉइज को पता हो कि भाई देयर डेटा इज गोइंग टू बी यूज्ड टू ट्रेन दिस मॉडल। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मतलब ये कि टू आंसर, मैं तो आपका सवाल बहुत अच्छी तरह समझा नहीं हूँ, लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, to try to answer your question, it's the responsibility of the company that's creating the model to make sure that the training data that they are using is either they have license to it, public है, या ये कि अगर किसी का personal data use कर रहे हैं तो they have their permission. I mean it's just it's a question of ethics. ठीक है जी आदिल। मेरा थोड़ा सा अगर वो इसका नेगेटिव मान करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एआई को क्या हैक कर सकते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अगर वो एक्चुअल उनके तो एग्जीक्यूशन वगैरह उनमें भी एआई यूज यूएस में वो काफी उसका काम कर रहा है। क्या ये हैक हो सकता है ऐसा कि बड़ा हमला होने से बचाया जाए? देखो मुझे मतलब मैं तुम्हारे स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जांपल यूज़ की थी स्टॉप साइन की, जिसमें जो है वो एक एआई जो है वो रिकग्नाइज कर सकता था कि भाई ये जो सामने साइन आ रहा है ये स्टॉप साइन है, लेकिन जब आप उसके ऊपर जो है वो रैंडम उसने कुछ ब्लैक डॉट्स लगा दिए थे, तो देन द एआई वाज नॉट एबल टू रीड इट एज अ स्टॉप साइन। इंस्टेड उसने जो है उसको रीड किया कि ये 80 माइल्स पर आवर स्पीड लिमिट का साइन है। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ हैकिंग। बेसिकली मतलब किसी ने उसको हैक करके बताने की कोशिश की कि भाई देखो मे बी वाइट हैट हैकिंग, लेकिन ये कि देयर आर प्रॉब्लम्स इन दिस मॉडल। ठीक है, तो मतलब आई एम श्योर के ये जो प्रॉब्लम है ऑफ हैकिंग, देयर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वेयर एआई अभी जो है ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं हुआ, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जहाँ पे यू आर पुटिंग ह्यूमन लाइव्स एट रिस्क। अब जैसे ये जो मिलिट्री वाली बात कर रहे हो, ये भी जो है मतलब देयर आर अभी भी जो है वो इस तरह के वो क्या है वो ऑटोनोमस रोबोट्स वगैरह होते हैं जो कि जाके जो है वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे मतलब ह्यूमंस कैन नॉट गो इन, सर्च एंड रेस्क्यू में भी जाते हैं, कॉम्बैट मिशंस में भी जाते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं। ठीक है, आई एम श्योर दैट वो बड़े कंट्रोल इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन देयर आर दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ you can basically fool AI to think that it's looking at something which is totally different than what it's actually looking at. So I'm not sure कि वो if this is something that we want to get into, but ये कि मतलब right now it seems like it's kind of easy to do. हाँ बिल्कुल। और इसका अमेरिका बनाता है और ऐसा में हमला करता है तो बताओ ना, मतलब बॉर्डर पे अगर जा रही है भाई देखो अभी जो उसको बोलते हैं एज केसेस, ठीक है, अभी जो एज केसेस हैं वो काइंड ऑफ लाइक वायरस ही है ना, कि मतलब अगर आपने अपने मॉडल को जो है अपने मॉडल को एक तरह से ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, एंड देन यू थ्रो एन एज केस एट इट दैट इट डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट, वो फूल हो जाएगा। उसका मतलब इट ब्रेक्स डाउन, राइट? दैट्स अ ब्रेक डाउन। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ हैक, राइट? कि आपने उसको ब्रेक कर दिया। तो आई डोंट नो इफ देयर इज
आप कोई वायरस बना सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि अपने मॉडल को जो है इतना ट्रेन करें या कोई ऐसी अप्रोच यूज करें कि जिसके तहत जो है उसको फूल करना या हैक करना मुश्किल हो जाए। एंड आई डोंट थिंक वी आर देयर येट राइट नाउ। जो है वो उसके लिहाज से तो लगता है कि यू कैन इजीली ब्रेक इट, विच इज़ वाई अभी तक जो है वो इस तरह की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बाहर आई नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू नो इट्स जस्ट द टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर येट। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएगी तो फिर देखते हैं क्या करना है। आदिल बहुत आगे की सोच रहा है। चलें भाई, किसी को कोई सवाल? जी But what we're not talking about, and I think this is essential, is how technology is impacting the human psyche, not on the technical end, but on how humans interact with other humans, how humans interact with the nature. And this is important क्योंकि ये research है कि जैसे जैसे AI और technology का trend आगे बढ़ रहा है, उस तरह humans का interaction, humans का nature से interaction is getting picked up. Oh no, that's also important क्योंकि अगर हमें जैसे ये पता लगे कि AI का या टेक्नोलॉजी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, तो इसका नाम लाइक यू सेड कि हाउ कैन AI be done right, so that's also an important aspect too. No, that's absolutely बिल्कुल no, you're absolutely right, and I don't think there's a lot of investment going into it. There are, जो आपने बोला वो भी है, there are also ethical issues, ठीक है, when you apply AI to you know मतलब facial recognition है, ठीक है, there are a lot of applications, there are a lot of businesses that use that in their decision making, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं एक टॉक सुन रहा था कि उसमें किसी ने सवाल पूछा कि ये जो गूगल, एंड आई थिंक दिस वाज अ 2 or 3 years old talk, but it was a relevant question back then, हो सकता है कि they have done better, कि यार ये गूगल जो है वो गोरों की शक्लें तो बहुत अच्छी पहचान लेता है, कालों की क्यों नहीं पहचान रहा? That was a question that was asked in the audience, ठीक है, and this is it's an ethical question, it's a social question, and the answer that the speaker could come out with was that training data नहीं दिया हमने भी उनको, ठीक है, but I'm not sure if that's the complete answer. दूसरी तरफ ये कि देखें अब when we talk about AI, so that's one, you know, आपने ये बोला, दूसरी तरफ जो है एक और इसका aspect ये है कि when you talk about AI, you know, we talked about is AI going to be so prevalent that, you know, jobs कम पड़ जाएंगी? That's a very true possibility. What do we do then? Yeah, especially जहाँ पे जो है मतलब if you go into Nordic countries में जाना शुरू करें, they are already playing with the concept of what's called UBI, Universal Basic Income, ठीक है। They are saying कि भाई AI जो है वो इतना prevalent हो जाएगा that we are not going to have enough jobs for humans. If we do not have enough jobs for humans, how are people going to make a living? They have to still live, right? खाना तो खाना है, जॉब नहीं है तो क्या हम फिर उनको सोशली जो है इस तरह how do we handle that? Because not all jobs are going to be relevant if AI gets to that level where it takes over majority of human jobs. Universal basic income जो है वो concept ये है कि भाई okay, what we are going to do in this is just one concept, there are others as well, कि हम जो है मसलन you know हम हर आदमी को इतने पैसे देंगे, this is their basic income, and the government is responsible for giving them a basic income which they can, जिससे उनकी ज़रूरियात जो उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी हों. Everybody will get it, ठीक है. Beyond that, if you want to make a better living, guess what? You're going to have to create new skills, learn something new, make yourself useful. Where now with all these jobs being gone, you're still useful and can go get a job in a different industry because you attain new skills. लेकिन ये कि कम से कम कोई भूखा नहीं मरेगा. So these are all ethical and social problems that people are still dealing with because this is on the horizon and this is coming. You know, it's already there in some, you know, really you know, developed countries. So yeah, that's an aspect as well. Anything? चलें ठीक है भाई, thank you.
Thank you for a very informative session. We can also